request the government that to do a cesarean to save a mother and a child, a mother who's suffering from preeclamptic toxemia, the next morning he cannot be expected to be present in the hospital at 9 o'clock because he was working till 5 o'clock in the morning, between 2 and 5. So this NMC should not be allowed to bring this notice and serve it on the doctors. I oppose it completely. It has happened, and the notice has reached the different hospitals of the country. I would also like to bring to the notice here that in this country there is a demographic deficit. Nearly 44% people who are seeking jobs are jobless. In the democracy, there is a shift of electoral autocracy. And as far as the job market is concerned, in the last one fiscal, 135 million labor force was added, which amounts to 450 million people looking for jobs, but there is no job market. There is no job, and this is the first time possibly in independent India that more than 45% reverse migration is happening. People are going away from the cities and towns towards the villages, looking for jobs in the farmland. But there also, the farming sector is being affected adversely by the increasing FDI. And the farmers are also committing suicide. Farmer suicide is rising so much that it is the report of the NCRB that the farmer suicide is approximately rising to 1100 to 90, one suicide per hour. This is a very serious note to be taken care of, that we are not by the Nari Shakti, we are not standing by the farmer under the regime of this government. The speech, I quote Honorable Rashtrapati Ji when she says that this government has made a contribution towards the wealth creators and believes in the private sector. Then why more than 1 lakh families who were engaged industrially in this country as wealth creators, these families have given up their citizenship of this country and relocated to other countries? Is it in protest against the violation of human rights and respect to diversity in this country? It's a serious question. Today, another thing that she quotes, I quote her, 46% of the world's total real-time digital transaction take place in India. Now, this digital transaction is also opening a death trap. Due to this digital transaction, suicide rate among the adolescent and young adults is increasing so much. Where she says 1,200 crore transactions were done through the Unified Payments Interface, UPI, it has become the center of the biggest UPI scam, and the government doesn't bother. And how is it happening? It is happening because the apps, there are apps which are being put up. I don't want to name the country, by a different country, a neighboring country, China. Not so friendly country. And due to, there is no vigilance over those apps. Due to this, there is a major rise in suicides. And young people are falling into the trap, going into the apps, and they are applying for loans, and when they can't fulfill repayment, they are committing suicides. She talks about the high-speed trains. But what about the tracks? These tracks in the country were laid in the British Raj. After that, the tracks have not been repaired. पटरी इतना सरा हुआ है कि जानलेवा दुर्घटना होती रहती है, और इसके ऊपर वंदे भारत चलाए हम या फास्ट ट्रेन्स चलाए तो एक्सीडेंट्स होते रहेगा, और we will lose so many people. So without repairing the tracks, without laying new tracks, we should not be going in for these fast moving trains. Then again, the coronary stents, knee implants, cancer medicines, prices have been reduced.
Maybe the government is self-congratulatory on that, but they don't mention that more than 12% increment in costs of many life-saving drugs have happened, which is making it very difficult for those patients who have to take medicines related to hypertension, medicines related to diabetes, because diabetes is like rampant in India. India might be called the diabetic capital of India. These medicines have increased in the whole of the nation. Highest number of diabetic cases are in our country. Mahamahim Rashtrapati ji also talks about Nari Shakti again, but women are paraded unclothed, like we've seen in Manipur. They have been manhandled, and nothing happened. This government did not interfere into Manipur. Even day before yesterday, we've seen 3 people being shot dead. And last month, we saw open fighting on the roads in Manipur, in Imphal. Business transaction is at its nadir in Manipur, and also in the other eastern states. So what is the government doing about it? And we would also like to point out that if we want the women folk to come forward further, their remuneration should be paid on time. Time and again, I have mentioned it here, written personally to the Honorable Minister here of Education, that the premier institutes are seeing their students, their research scholars, go without pay. Places like Indian Institute of Technology, IITs, the researchers, the PhD scholars are not getting paid. That is not mentioned here. The other thing is about the daily wage earners. It was decided that they would be given 100 days of work. But in the budgetary allocation of this very fiscal, their provision is only for 42 days. The total amount required would be 2.72 lakhs, but only 60,000 crore has been given. Why the states are not getting paid? And these 100-day workers, as in West Bengal, we have the 100-day workers who have not been paid for months together, and they have worked. The statute is that they should be paid after finishing the work within 15 days. Now months have turned up, but they have not been paid. These people are being tortured family-wise because they cannot run their home and hearth. The country should sit up, the government should sit up and take into cognizance the poor people of West Bengal who are suffering so. Farmer death by suicide in 2022, as per NCRB report, is rising, on the rise. 11,290 was the number in 2022. And when you say that making farming more profitable is the intention of this government, why is FDI increasing? The FDI, the direct investment of foreign party into the farming sector, 2016-17 was $727.22 million. 2019 to 2020, it was $904.70 million. So it shows that whatever farming is in the hands of the farmer is not getting any benefit out of it because FDI entered the farming sector also. Then we see that the government talks about the grain storage plan. In 2020-2023, crop produced in the country was 3,296.87 lakh tons. But the storage capacity of the country is only 145 MMT. That is nearly half. So we have capacity to store only half of the grains we produce. And the other half is rotting on the streets in the rain and the sun. So we are not equipped to give respect to the produce of the farmers. Whatever the farmers doing their own toil, they are producing their own crops, not getting any help from the government at all. And even as far as northeastern states concerned, I don't know how this could be included in the speech, because the northeastern states have no development. There is no proper facility for the medical treatment. There is no proper facility
for their education. I myself have visited 3 to 4 out of the 8 sister states. And the condition is so pitiable that the children don't have schools to go, women don't have proper facility for health care. So Northeast is not we can boast of. This should not have found a place here. And again then, where their renewable energy installed capacity has found a 4th place, it is congratulatory. But there is no mention about the grid conversion of the renewable energy that is formed through the renewable sector. Then again, we are talking about here that previously we had 7 AIIMS and 390 medical colleges. But now the number has increased to 16 AIIMS and 315 medical colleges. But where are the faculty? I know it very well, being a doctor myself and in the teaching line myself, that this NMC's directive will further shrink the faculty sector. They're going to leave their jobs if NMC doesn't withdraw their draconian directions. We don't have faculty. Either you organize teachers, get them from abroad, pay them properly. The doctors are not paid properly in the country. The doctors are working throughout the day and night. When the doctor's telephone on the table, bedside table rings at 3 a.m. in the morning that there is a known patient who's getting pain in the chest, the doctor will not look at anything else, not think of anything else. He will just get up, take his car and go to the patient to give a cardiac resuscitation. But the doctors are being underpaid. And this NMC regulation, 9 to 4, this is like an added tension for the doctors. So more people will leave the job. There is no faculty. You are making college buildings. Where is the faculty to teach the students? Students with a lot of dream, they will get into the medical line to learn about medicine, to stand by patients, to treat them and get them well. But there is no teacher. There is no infrastructure. The building is not the infrastructure in medicine. The equipments are. In the medical infrastructure, we have to have the technicians who teach you how to put the Ryle's tube in a patient, or how to do a canal and start the IV fluid. We don't even have that. So the manpower and the infrastructure is lacking. Having building for AIIMS will not suffice. And then again, we talk about the historical places which are being renovated, and there are many sites which are being discussed to be upgraded. In my constituency, there is a place called Chandraketugarh. This Chandraketugarh is supposed to be nearly 3,000 years old. And after repeated requests to this government, to the central government for 10 years, nothing happened. Then my chief minister, Honorable Mamata Banerjee, allotted funds by which we got a site museum made, and we have exhibited the things that we found, the relics in Chandraketugarh. A small museum is working there. I worked 10 years very hard to get this museum put up, but the excavation is stopped. This was either in the Gupta period or in the Mauryan period, and it had a port city also, showing relics and important structures to prove that there was business through the river up to Europe, because we found the seals, we found the statues. But the excavation has stopped in Chandraketugarh by ASI. So the government, if you say that they are doing a lot, then the first thing they should do is take up Chandraketugarh as a heritage site, as a World Heritage Site. So as you say, put forward arguments, and Mahamahim Rashtrapati ji comes and reads, I would like to say the government is really not doing justice to all these sectors, to all the segments of people in the country, and all the farmers, industrialists, students, and Nari Shakti. Thank you, sir. Thank you very much. Next speaker, Dr. Kirtbhai Solanki ji. सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा पर
बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। सभापति जी, मैं आज डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित जी के प्रस्ताव के समर्थन में यहाँ मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। और कुछ समय पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने इस सदन के बारे में और संविधान के बारे में जो टिप्पणी की है, मैं उसका एक ब्रीफली जवाब देना चाहता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करना सब पूरी आगे बढ़ाऊंगा। हमारे मित्र ने यहाँ कहा, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्द कहा और जो संसद की गरिमा के बारे में कहा, मैं उसकी आलोचना करता हूं। अहमदाबाद से हूं और 2010 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उस वक्त संविधान की बहुत ही धज्जियां उड़ रही थी। तब उन्होंने सुरेंद्रनगर में से संविधान की एक यात्रा निकाली थी। संविधान को हाथी की अंबाड़ी पर रखकर प्रधानमंत्री जी ने उस यात्रा की अगुवाई की थी और इसमें मैं भी उपस्थित था। करीबन 2 किलोमीटर चलकर संविधान के प्रति आदर करने वाले कोई व्यक्ति है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां तक संविधान की बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पी बाबा साहेब आम्बेडकर का अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपमान किया है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने किया है। बाबा साहेब आम्बेडकर का तैलचित्र जहां संविधान जहां स्वीकृत हुआ था, वो संसद भवन के जो सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब आम्बेडकर का तैलचित्र नहीं था, वो लोगों ने किया था। इतनी बड़ी देश की पाटनगर राजधानी में धड़ नेताओं का उनका स्मारक या मेमोरियल था, मगर बाबा साहेब आम्बेडकर का कोई मेमोरियल नहीं था। 15 जनपद के पर जो बाबा साहेब आम्बेडकर विश्व मेमोरियल अगर किसी ने स्थापना की थी, अगर किसी ने उसका शिलान्यास किया था, अगर किसी ने उसका उद्घाटन किया था, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसी प्रकार 26 अलीपुर रोड जहां बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अंतिम सांस लिया था और वो एक निजी प्रॉपर्टी थी, जो बंगला था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां संकल्प किया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर का हम यहाँ मेमोरियल बनाएंगे। उसके बाद वो सरकार चली गई, वो दायित्व नरेंद्र भाई मोदी जी के पास आया और आज उन्होंने 26 अलीपुर रोड पर जिस प्रकार के संविधान का पुस्तक के आकार का वहां जो आर्किटेक्चर के तौर पर वहां एक भव्य मेमोरियल बनाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। कांग्रेस के मित्रों ने बाबा साहेब आम्बेडकर को जो उनकी दुहाई देते थे, उनको हर पल पर उन्होंने उनका अपमान किया था। आज यहाँ इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण की चर्चा पर मैं बताना चाहता हूं कि नए संसद भवन के कक्षा में इकट्ठे सभी सांसदों के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को अपने 75 मिनट के संबोधन में महामहिम राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान और चीन के स्पष्ट संदर्भ में आतंकवाद और विस्तारवाद को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सशस्त्र दलों को सराहना की थी, उनको सलामी की थी। मैं महामहिम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महामहिम जी ने कहा था कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून पेश किए हैं और संसद का दायित्व है कि कानून को पारित करना, पॉलिसी को बनाना, और जो कानून पास किया है उसमें मैं आपको गिनाऊं तो नारी शक्ति वंदना भी अधिनियम, और इसकी वजह से हमारी 50% आबादी को विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके लिए अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक हमारी न्याय संहिता का सवाल है, जो नई न्याय संहिता है, पहले हम
गुलामी की मानसिकता रूप हम न्यायपालिका का हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसका एक इंटेंशन किसी को क्रिमिनल है किसी को डिक्लेयर करना था, जब हमारी सरकार ने न्याय संहिता का वहां पालन किया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यही संसद ने पारित किया है। जन विश्वास अधिनियम, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण, खास करके ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने का अधिनियम इसी संसद में पारित हुआ है। जन विश्वास अधिनियम ने विभिन्न कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने इन्हें लागू करने में सहयोग देने के लिए हमारे सभी सांसदों का भी उन्होंने सराहना की थी। संसद की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बहुत बड़ा जोर दिया है और उन्होंने करके दिखाया है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा के प्रतीक और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्याति भव्य मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में अब वास्तविकता बन गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के कर कमलों से वहां उनका प्राण प्रतिष्ठा किया। हर भारतीयों का एक जो सीना गौरव से चौड़ा हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं पूरे देश की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक विकसित भारत की कल्पना है, प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना रही है कि इस भव्य इमारत ज्ञान के 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी की जाएगी और ये स्तंभ है गरीबों, युवाओं, अन्नदाता यानी कि हमारा किसान और नारी शक्ति यानी कि महिला। भारत की अगर आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो भारत आज आर्थिक विकास के 5वें पायदान पर आ गया है। इंग्लैंड को हटाकर हम 5वें पायदान पर आए हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर सालों तक हमारे पर राज्य किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। कुछ ही समय में भारत विश्व में आर्थिक रूप से 3रे पायदान पर आने की पूरी शक्यता है। भारत आज आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह जाना जाता है। राष्ट्रपति जी ने बताया कि भारत ने लगातार 2 तिमाहियों में 7.5% से अधिक विकास दर यानी कि जीडीपी बनाई रखी है। भारत हाल के वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। भारत नाजुक 5 से शीर्ष 5 अवस्था में परिवर्तन भारत की इकोनॉमी है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर ऊपर आ गए हैं। मैंने देखा था कि एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी थी। अगर गरीबी हटाने का लिए किसी ने कार्य किया है, किसी ने धरातल पर कार्य किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में निर्यात एक 450 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। ये भारत का प्रभुत्व पूरे देश में और पूरे विश्व में लहरा रहा है। जहां तक विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक हो गई है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का उत्पादक है और पहले हम देखते थे कि मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेक इन इंडिया की नीति के तहत आज भारत जो प्रोडक्शन में जिस प्रकार से दुनिया में अव्वल स्थान पर जा रहा है, इसके लिए पूरे देश में एक नया रोजगार मिलेगा और इसके लिए हमारी सरकार का हमारे महामहिम ने उनको धन्यवाद दिया है। ये सफलता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से है। जहां तक डिजिटल इंडिया में भारत समग्र विश्व में अग्रसर रहा है, इसकी वजह से भारत में जीवन और व्यवसाय को बहुत आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है, जो एक नए युग का डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इसमें अग्रसर रहे। जहां तक मेडिकल का सवाल है, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, और जहां तक मेडिकल का सवाल है, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, हमारे आदिवासी भाइयों में एक बीमारी पाई जाती है। इस सरकार ने मिशन मोड पर सिकल सेल एनीमिया को नाबूद करने के लिए एक जो योजना बनाई है, मैं समझता हूं कि ये हमारे गरीब पिछले पायदान में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप योजना होगी। जहां तक कोविड महामारी का सवाल है, कोविड महामारी के दुनिया के बड़े बड़े देश जिनका हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत था, वो देश भी बिखर गए थे। तब हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के जो अगुवाई में हमने उसका मुकाबला किया, और मैं तो स्वयं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है कि चाहे वैक्सीन अगर कहीं से आता था तो वो विदेश से आता था वैक्सीन, कई चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, और भारत में कोई वैक्सीन 25 साल के बाद आया था, कोई वैक्सीन 40 साल के बाद आया था, कोई वैक्सीन 20 साल के बाद आया था। मुझे बहुत फक्र होता है, मुझे बहुत गौरव होता है कि इस देश में बना हुआ वैक्सीन की वजह से आज भारत में हम सब लोग बिना मास्क अगर यहाँ बैठे हैं तो हमारी सरकार की वजह से है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई की वजह से है। और हमारे यहाँ हमारे देश में 2 वैक्सीन बने हैं। और जहां तक वैक्सीन इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, आज अमेरिका जैसा बड़ा देश में भी 100% लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण नहीं किया गया है। मुझे बहुत ही इस बात का मैं गौरव महसूस करता हूं कि इतनी विविधता वाला देश, चाहे मरुभूमि हो, चाहे पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे दूर सुदूर के प्रदेश हो, वहां भी जाकर 2 वैक्सीन देने का हमारा हेल्थ कर्मियों ने जो कार्य किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा कार्य किया है। और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये जो वैक्सीन बनाने का, कोविड वैक्सीन बनाने का कार्य हमने जो किया है, मैं समझता हूं कि ऐसा कार्य न भूतो न भविष्य होता है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसके लिए गौरव महसूस करता हूं और हमारी सरकार को मैं वंदन करता हूं। जहां तक कृषि का है, कोविड-19 महामारी फैलने के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन, निःशुल्क राशन प्रदान किया गया। और कल के बजट में इस राशन को 5 साल और उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। इतना बड़ा अगर कार्य है, लोग हमने देखा है कि जब महामारी फैलती है तब महामारी से जितने लोग नहीं मरते हैं उससे ज्यादा लोग वो भूख की वजह से मरते हैं। तब इस सरकार ने लोगों को अन्न दिया है, लोगों को राशन दिया है, उनका अधिकार का राशन दिया। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि हो या पीएम फसल बीमा योजना हो, वो कई योजनाओं में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लोगों के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ किया है। पिछले 1 दशक में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध करने के लिए 11 करोड़ रुपए का खर्च, 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसी सरकार ने किया है। और इसके लिए किसानों की आय दोगुनी होगी। भारत के किसान सरकार के साथ है। और ये यहाँ है भारत का जहाँ रक्षा का सवाल है, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत के रक्षा बलों की पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। 4 दशकों में प्रतीक्षित वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया और पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का उनको फायदा मिला। ये सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे तो बहुत सारे हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है, एससी और ओबीसी छात्रों का नामांकन करीबन 444% बढ़ा है। और जहां तक हमारे ट्राइबल स्टूडेंट का सवाल है, उनका नामांकन 65% बढ़ा है। ये सरकार की वजह से किया गया है। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके 14,000 से अधिक PMMHRI स्कूलों पर काम कर रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आयुष्मान भारत
मुझे पता है कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की थी और ये योजना को आगे बढ़ाते हुए आज पूरे देश में करीबन 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचा है। और गुजरात सरकार को मैं बधाई इसलिए देता हूं कि गुजरात सरकार ने इसकी राशि 5 लाख प्रति परिवार को बढ़ाकर 10 लाख प्रति परिवार को किया गया है। इसके लिए मैं हमारे गुजरात सरकार को भी मैं बहुत ही बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 में अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो कार्य किया है, इसके लिए भी हमारे अफ्रीकन कंट्री प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। सामाजिक न्याय पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है और इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे महामहिम ने ऐसी कई बातें अपने वक्तव्य में किया है। मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले मैं एक कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये पंक्तियां सिर्फ मेरे हृदय में नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय में ये पंक्तियां गूंज रही है और ये पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करता हूं कि सपने नहीं हकीकत बुनती है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर BV सत्यवती जी। Thank you very much for allowing me to participate in the motion of thanks to Honorable President's address from YSR Congress Party under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. First of all, I congratulate the government for its noteworthy achievements, including positive developments in Jammu and Kashmir, ensuring a safe and peaceful environment for its residents, and the successful launch of the Aditya mission, reaching a distance of 15 lakh kilometers away from Earth. India's groundbreaking feat of placing its flag on the southern pole of moon and opening the space sector to startups is commendable for fostering innovation. So I also commend the government for steering India to become the fastest growing majority economy amidst a global crisis, maintaining a growth rate exceeding 7.5% for 2 consecutive quarters. Chairperson Sir, however, I would like to take this opportunity to offer a few suggestions concerning the key points highlighted in the President's speech, particularly in relation to the role of Andhra Pradesh in the future of India's growth. First one is regarding food and public distribution. So increasing coverage of ration cards under National Food Security Act 2013. Commending the government's commendable initiative to provide free ration to 80 crore people during the COVID-19 pandemic, along with the recent extension for 5 more years, there are critical issues regarding the coverage of the center's ration cards under the National Food Security Act 2013 NFSA in Andhra Pradesh that need immediate attention. So the challenge of insufficient coverage under NFSA 2013 in Andhra Pradesh, primarily due to relying on the 2011 census for ration distribution, has been discussed in various center-state meetings. So pursued with the Department of Food and Public Distribution, DFPD and Niti Aayog, the state has issued rice cards and provided rations to over 56 lakh families, incurring a cost exceeding rupees 5,527 crores. Niti Aayog recommends reallocating unutilized quota, urging prompt action from the Ministry of Statistics and Program Implementation for a fresh household consumption expenditure survey, HCES, and comprehensive examination by DFPD. So a revision in the methodology for identifying NFSA beneficiaries and a new census are urgently requested, along with government compensation for expenses incurred in extending benefits to those excluded by the central government. This is the demand from the state of Andhra Pradesh. And the second point, Honorable Chairperson Sir, climate change vulnerability.
So climate change poses a significant threat to India, manifesting in disruptive weather events from El Nino to record-breaking heat waves. This overarching concern impacts various facets of the country, including threat to food security, extreme weather events, cyclone and heat waves. In light of the history of nearly 60 cyclones in the last 5 decades, causing damages totaling around rupees 87,000 crores, I urge the government to institute a permanent central fund to compensate cyclone victims in Andhra Pradesh. The financial support from this fund will be essential for the rehabilitating annual victims, repairing infrastructure damages, and establishing climate-resilient infrastructure and communication networks to enhance emergency response capabilities. Furthermore, the Finance Minister's announcement of Blue Economy 2.0 during the interim budget to promote climate-resilient activities and sustainable development in coastal areas brings hope that these efforts align effectively with climate challenges, ensuring adequate central assistance for states like Andhra Pradesh. And regarding health and family welfare, Honorable Chairperson, Sir, high output of pocket spending on healthcare. Although government spending on healthcare in India has increased since 2013-14, patients still bear nearly half of all health costs directly in regard to medicines, diagnosis, and other medical expenditures. In 2018-19, while 40.6% of health spending was covered by the government, 48.2% still came from patients, according to the Economic Survey 2022-23. Thus, despite improvements in states' healthcare funding, the burden of healthcare costs on individuals remains substantial. On average, Indian families allocate 7.9% of their entire annual household expenditure to healthcare, emphasizing the ongoing challenge of high out-of-pocket health spending. So the government's flagship program, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, PMJAY, has experienced lower actual spending compared to the proposed budget estimates in the fiscal year 2022-23. The scheme's actual spending was rupees 6185.80 crores, although the proposed estimate for financial year 23-24 was rupees 7200 crores. So, Honorable Chairperson, Sir, Dr. YSR Arogyashri Health Scheme, a government-sponsored healthcare initiative in Andhra Pradesh, on the other hand, ensures universal health coverage for all its beneficiaries. It addresses primary care by offering free screening and outpatient consultations in health camps and network hospitals, eliminating additional out-of-pocket expenses for its beneficiaries. So the scheme provides end-to-end cashless services for identifying diseases under secondary and tertiary care through a network of service providers from both the government and private sectors. The scheme encompasses a comprehensive range of 2434 surgeries and therapies across 30 systems. Honorable Chairperson, Sir, the central government's commitment to rewarding good performances must be appreciated. However, these suggestions can possibly make a more robust mechanism, which would in turn act as a more persuasive incentive for states to improve their performances in all service sectors, especially aspirational district program. So the aspirational district program has been pivotal in the development of 112 districts, and changing the lives of almost 25 crore citizens. Among these districts has been YSR Kadapa, which has also been given the title of one of the best performing districts among those in the program, and Parvatipuram Manyam district, whose performance has been so stellar that it was entitled to receive an additional rupees 3 crores allocation last year. Such efforts to reward developmental efforts must be lauded. It is important to bring up more performance-based incentives within the program to benefit states that are showing strong signs of improvement, such as the district of Andhra Pradesh. And the last, before I conclude, regarding renewable energy. So solar and other forms of energy, the commitment shown towards rooftop solarization
is extremely important given the urgency with which sustainable mediums of energy generations must be promoted. This change must also be driven forward by public institutions. In our state of Andhra Pradesh, Andhra University at Visakhapatnam has already installed solar energy generation system on all its building rooftops and has shown an admirable commitment to the implementation of net zero energy program. So I request the central government to ensure other public institutions also take up similar measures. Honorable Chairperson, sir, from the state of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Garu Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, I would like to conclude that the significant role of Andhra Pradesh plays in Bharat's journey towards prosperity. The state excels in education accessibility, ease of doing business, leading marine exports, organic farming, and ongoing efforts in supporting farmers and empowering women. Addressing the long-standing demand for special category status and fulfilling all commitments outlined in the AP Reorganization Act 2014 will further enhance Andhra Pradesh's contribution to the nation's progress. Central government's collaboration with Andhra Pradesh can be instrumental in advancing Bharat's overall development. So before I conclude, from the state of Andhra Pradesh, a Telugu orator and poet and novelist and social reformer, Gurajada Apparao garu. In Telugu, దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్ గట్టి మేల్ తలపట్టోయ్. With these few words, I say my thanks to President's address and I support all these achievements of the central government from the state of Andhra Pradesh, and we need a wholehearted more support for the state of Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you, Madam Satyavati ji. Next speaker, Sri Chandrasekhar Sahu ji. धन्यवाद सर. सभापति महोदय, मु विजु जनता दलर सर्वोच्च नेता मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे गठित सरकार विजु जनता दल तरफ प्रतिनिधित्व करुवा सांसद हिसाब से वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जड़े आदिवासी महिला जे कि ओडिशारू आसिचंती एवं अति साधारण परिवार आसी आज भारतर महामहिम राष्ट्रपति हेबार सम्मान पाइछन्ती एवं सेथिपाई मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को जे राष्ट्रपति महोदया महामहिम राष्ट्रपति महोदया जहाँ को भाई बोली संबोधन करचंती सही बोली जड़े महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला प्रथम आदिवासी महिलांकर अभिभाषण उपरे धन्यवाद देवार सुजोग मते देइथिबा जोगु मो दल एवं मो दलर नेता नवीन पट्टनायक एवं सभापति महोदय एवं स्पीकर को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुछि. सभापति महोदय, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति तांकर अभिभाषण रे बहुत बड़ बड़ फ्रीडम फाइटर एवं अनसंग हीरोज को वर्णना करछंती. सेति भितर ओडिशार जड़े महामान्य व्यक्तित्व को जे कि महात्मा गांधी जातिर पिता महात्मा गांधी आदर्श रे अनुप्राणित ही त्याग एवं देश पाई निजक उत्सर्ग करथिले सही बरी जड़े महान व्यक्तित्व पंडित गोपबंधु दास उक्ति को नहीं तांकर अभिभाषण आरंभ करथिले. मु ताकू केवल कोट करुछि. मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठिरे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़.
सभापति महोदय ओडिशा रे प्रथम थर पाई वर्तमान विश्व ओडिया सम्मिलनी आरंभ होईछि। आमर मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तार नेतृत्व नहीं प्रथम थर पाई ओडिशा रे विश्व ओडिया सम्मिलनी आरंभ करछन्ति। सेही परिप्रेक्षी रे मते आपण ओडियार कहिवा पाई जो सुजोग देइछन्ति सेथि पाई मु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करछि। सभापति महोदय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति तांकर वक्तव्य रे आदित्य मिशन कथा चंद्रायन कथा वर्णना करछन्ति जहाँकि निश्चित भाव में केंद्र सरकार एवं भारत वर्षर हजार हजार साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक माननकु समस्ते अभिनंदन पात्र। मु मध्य बिजु जनता दल तरफरु समस्त को अभिनंदन करछि। सभापति महोदय महामहिम राष्ट्रपति बिरसा मुंडा महान व्यक्तित्वंकर बर्थ एनिवर्सरी कथा एवं रेकग्नाइज जे जनजाति गौरव दिवस भाव में पालन होगा कथा उल्लेख करथिले एवं मु आज मन पकई देवा चाहे जेतेबेले मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केंद्र रे स्टील मंत्री थिले सेतेबेले सेही विभाग तरफरु पार्लियामेंट परिसर रे महान त्यागी नेता एवं स्वाधीनता संग्रामी बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति स्थापन होता एवं आज ओडिशार राउरकेला रे स्टील सिटी रे बिरसा मुंडा स्टेडियम जहाँकि पृथ्वीर सबुठु उत्कृष्ट स्टेडियम ताकू आमर मान्यवर मुख्यमंत्री निर्माण करिसेंति। सभापति महोदय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति पारा 6 रे नारी शक्ति बंधन अभियान विषय रे उल्लेख करचंती। मु आपन को मन पकई देवा चाहे ओडिशार प्रभात पुरुष भारत वर्षर जड़े आग धाड़ी नेता जहाँ मृत्यु शरीर रे भारत वर्षर फ्लैग सहित राशिया और इंडोनेशियार फ्लैग पड़ता से भली जड़े महान नेता स्वर्गीय बिजू पट्टनायक जेतेबेले ये रिजर्वेशन कथा नारी रिजर्वेशन कथा उठिला तार आगरू ओडिशा रे 33% पंचायत स्तर रे एवं म्युनिसिपालिटी स्तर रे रिजर्वेशन करथिले। परवर्ती अवस्था रे मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 50 भाग रिजर्वेशन करचंती एवं आज संसद रे जो नारी मानक पाई विधानसभा एवं लोकसभा रे रिजर्वेशन कथा पारित होईची ताकू ओडिशा विधानसभा रे सर्वसम्मति क्रमे पारित करी बहुबार आम्मान को जरिया रे एठारे उपस्थापन करा जायछि। सही भली महान नेता से बिजू बाबू को भारत रत्न देवा पाई बहुबार दाबी होईछि किंतु आज पर्यंत केंद्र सरकार ताको ग्रहण करना। तेणु मु आपण जरिया रे आज रे धन्यवाद प्रस्ताव उपरे मु अनुरोध करी जे सही भली महान प्रभात पुरुष बिजू बाबू को भारत रत्न देवारे निश्चित भाव में केंद्र सरकार विचार करिवे। सभापति महोदय आमर ट्राइबल आदिवासी जनजाति पॉपुलेशन सबुठु अधिक ओडिशा रे एवं सेमानंकर 169 कम्युनिटी पाई गोटे लिस्ट ताकू अंतर्भुक्त करने पाई आदिवासी जाति भितर अंतर्भुक्त करने पाई बारंबार डिमांड आसी एवं सही को मु भावुची अनुरोध करुची जे केंद्र सरकार ताकू तुरंत कार्यकारी करिवे। सेहीपरि आदिवासी भाषा हो मुंदारी भूमिज सावरा
एवं कुई लैंग्वेज को मध्य 8 शेड्यूल रे संविधान रो अंतर्भुक्त करिया पाई मोर डिमांड रहुछि। सभापति महोदय, प्राय 10 लाख लोक गरीब लोक केन्दुलीप रे बंचुचंती एवं से केन्दुलीप उपरे जे वर्तमान 5% जीएसटी थिला ताकू 18% करा जायछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अनुरोध करचंती सही जीएसटी को संपूर्ण भाव में उठे दबा पाई। सही परी आज जो आयुष्मान भारत कथा कहा जाउछि, ओडिशा रे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जरिया रे प्राय आशा कर्मी ठू धरी अंगनवाड़ी कर्मी ठू धरी इनकम टैक्स पेइंग को छाड़देले आउ समस्त को एथिरे अंतर्भुक्त करा जायछि एवं महिला मान को पाई 5 लाख एवं महिला मान को पाई 10 लाख एवं पुरुष मान को पाई 5 लाख। मु आशा करी जे आयुष्मान योजना रे मध्य एही भरी जो 5 लाख अच्छी महिला मान को प्रति अधिक करने विचार करा जिया उचित। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना रे ओडिशार 7 लाख घर ए पर्यंत मिलवा कथा ताकू दिया जाय नहीं। विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण रु ताकू विभिन्न आड़े बंद कर जाउछि। तेणु मु आज प्रस्ताव सहित आपण जरिया रे केंद्र सरकार को अनुरोध करी जे 7 लाख घर तुरंत प्रदान करा जाऊ। सही परी नेशनल हाईवे कथा जदि उठिबो ताहले नेशनल हाईवे 55 जहाँकि आमर कटक संबलपुर रास्ता वर्तमान मरण जनतार पहुंची। प्रति वर्ष 100 टू 150 लोक सीठे मरुचंती। सही परी NH 16 जहाँकि वर्तमान अधापंत्रिया भाव में कार्य चलती ता प्रति दृष्टि देवा एवं ताकू तुरंत कार्यकारी करने मु आपण जरिया रे दाबी जनाऊँगी। सभापति महोदय, आमर